students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today students, we are going to start the second chapter of computer class first. That is about the machines. So today students, we will learn about machines, that what are machines, how do they work, and then we will learn about a very smart machine known as computer. Let's start it. See, so dear children, look at the following pictures. See, they have given you some of the pictures over here. So what are these pictures? This is a mobile phone, ये आपका refrigerator है, this is bike, television, car. So students, all of these things are what? These are machines. ठीक है? ये सारी चीजें क्या है? Machines है. Now, before we study about machine, let us study about the natural things and man-made things. अब machines के बारे में समझने से पहले हम दो different types of things को समझेंगे. That is natural and the other is man-made. So first of all, natural things. Natural things क्या है? That is air, water, flower, animal, sun, etc. These are the examples of natural things as they are made by the nature. So ये जितने भी examples आपको given है, air, water, sun, plants, flower, animal, what are these students? ये सभी natural things हैं. Why? Because they are created by the nature. Nature ने, God ने इनको create किया है. All right. No human being has made all of these things. Therefore, these are known as natural things. See, they have given the pictures below. This is flower, animal, sun, tree. All of these are natural things. Second, we have man-made things. अब man-made things कौन सी है? Which are made by the man. जिसको man ने, human being ने, हमने बनाया है. All right. They are not created by the nature or the God. Those are known as man-made things. For example, table, chair, car, fan, etc. ये सभी आपकी man-made things है. You can see the pictures also below. They have given you. This is chair, fan, shirt, bus. ये सभी क्या है? Man-made things के examples है. Now let's back to the machine. Machines क्या है? So machines are also man-made things only. So जैसे कि अब हमें natural and man-made के बीच में difference clear हुआ है. So now if we talk about machine, so machine भी एक man-made thing है. That means it has been created by the man. All right. If it could be refrigerator, washing machine, air conditioner, ये सभी machines हैं and they all are made by the man. See, machine help us in different ways. Machines हमारी help करती है in different ways. जैसे कि if we take the example of washing machine, so washing machine का आप use करते हो to wash the dirty clothes. गंदे कपड़ों को wash करने के लिए we use this machine, right? Secondly, refrigerator का काम है what? To keep the things cool. So refrigerator भी क्या है? एक machine है जो चीज़ों को ठंडा रखती है. Third, air conditioner. It provides us cool air. So air conditioner again एक ऐसी machine है जो आपको cool air provide करती है, ठंडी हवा, right? चल. Now features of a machine. अब एक machine के different features क्या हैं students? Number one, machines need our instructions to do a work. Very important कि machines को किसी भी एक work करने के लिए पहले instructions provide करने पड़ते हैं. वो instructions हम provide करेंगे as a human being and then only the machine would perform a particular task. Secondly, machines do not get tired. Machines कभी भी tired यानी कि थकती नहीं है. Third, machines make our work easy. Machines हमारे work को बहुत easy बना देती हैं. Most of the machines need fuel to run. ठीक है, ज़्यादातर machines को क्या fuel की ज़रूरत होती है run करने के लिए. And machines can work very fast, hence they can save our time. क्योंकि machines बहुत fastly work करती है, इसलिए machines के through हमारा time भी save हो जाता है. So these are some of the features of machines. Now, how do machines work? So, अब machines work कैसे करती हैं? So, number one, that some machines, कुछ ऐसी machines हैं जैसे कि aeroplane, car, bus, etc. ये fuel पर work करती हैं. Secondly, कुछ machines हैं like fan, AC, refrigerator, etc. They work on electricity. ये electricity यानी कि बिजली के through काम करती हैं. And then some machine जैसे कि scissors, bicycle, swing machine, etc. They work with the help of humans. इन्हें manual power की human being की help के through ये work करती हैं और they run. Alright? चलो. So now we come to a very smart machine known as computer. So computer क्या है? It is a smart machine which works on electricity. So as I told you कि कुछ machines electricity पे भी work करती हैं. So computer उन्हीं इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करने वाली मशीन में से एक है एंड इट इज अ वेरी स्मार्ट मशीन. हाउ? सी,
कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड सेव्स अवर टाइम. कंप्यूटर बहुत फास्टली वर्क करता है एंड हमारा टाइम सेव करता है. सेकेंडली, वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हो. वी कैन सॉल्व सम्स ऑन अ कंप्यूटर. सम यानी कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, यू कुड ईजिली सॉल्व ऑन अ कंप्यूटर. वी कैन राइट लेटर्स विदाउट यूजिंग पेपर एंड देन आप कंप्यूटर के थ्रू लेटर्स भी लिख सकते हो, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को सेंड कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर. देन वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स. कंप्यूटर पे पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी कैन वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर. इफ यू वांट तो आप कंप्यूटर पे मूवीज देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो. Alright, so ये सभी वर्क और टास्क है which a computer could perform for us and therefore it is considered as a smart machine. Now computers are at different places. अब computers का जो use है students nowadays आज के टाइम पर बहुत सारे places पे किया जाता है for different purposes. So let's discuss some of the places where they are used. Number one, we have home. यानी कि सबसे पहले हम अपने घर में कंप्यूटर का यूज करते हैं. For what? To study and play games at home. खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हम अपने घर में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं सबसे पहले. Then secondly, school. कंप्यूटर्स का यूज स्कूल में भी किया जाता है. For what? For teaching and learning. Then bank. Computer is used to deposit and withdraw money in banks. Banks में money deposit करने के लिए, money withdraw करने के लिए. For that purpose also we use computers in the banks. All right. Okay. Then next we have what? Office. So computer is used to do official works in offices. Offices में भी कुछ official works को करने के लिए computers का use किया जाता है. Next we have restaurant. रेस्टोरेंट में कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं टू पे द बिल्स ऑफ फूड आइटम्स. आपने जो भी फूड आइटम्स रेस्टोरेंट में खाए थे उनके बिल को पे करने के लिए द कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ओवर देयर. नेक्स्ट, एयरपोर्ट. सो एट एन एयरपोर्ट ऑल्सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर बुकिंग टिकट्स एंड गेटिंग फ्लाइट डिटेल्स. ठीक है, टिकट्स बुक करने के लिए, फ्लाइट डिटेल्स जानने के लिए एयरपोर्ट्स पे भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट वी यूज द कंप्यूटर एट होटल ऑल्सो. सो होटल में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड द गेस्ट डिटेल्स. जितने भी गेस्ट वहाँ रुके हुए हैं उनकी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ होटल में भी किया जाता है. एंड द लास्ट, शॉप. सो इन शॉप्स ऑल्सो कंप्यूटर्स आर यूज टू मेक द बिल्स ऑफ परचेज आइटम्स. जो भी आइटम्स आपने वहाँ पे परचेज किए उनके बिल प्रिपेरेशन के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ शॉप्स पर भी करते हैं. All right, so that's the chapter we have completed. Now let's come to the exercise portion. All right, see. So first of all, what we have to do is we have to darken the correct options in the OMR sheet. This is the OMR sheet. All right. Use only black pencil to fill the circles. It should be darkened completely and properly. See, for that you are going to use black pencil. Here I'm using any kind of pen, but for you, you have to use the dark color pencil. All right. See, first question, that which of the following is a natural thing? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो natural है? That is either this table, rose, a kind of flower, then cycle, bicycle, or none of these. So as we could understand, the rose or this flower is a natural thing. So option B is correct. You are going to color this one. Oh wait. I could do it for you. Black only. All right. Cha. Next you have what? That dash is used to keep things cool and fresh. किसका यूज किया जाता है चीजों को कूल एंड फ्रेश रखने के लिए? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और साइकिल. सो एज यू ऑल नो रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं चीजों को ठंडा एंड फ्रेश रखने के लिए. सो अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑलराइट. थर्ड is what? That aeroplane, car and bus. Aeroplane, car and bus किसके through work करती है? Electricity, fuel, none of them, all of these. So answer is fuel. Again option B is correct. All right, chalo. Now next we have fill in the blanks using correct word from the help box. ठीक है, so अभी fill in the blanks हम करेंगे help box में से correct boxes, correct option का use करके.
So the things which are made by the man are called, वो things जो man के through बनाई जाती हैं, they are called man-made things. So write over here, man-made things. ठीक है, चलो. Second, air, water, animal, etc. are examples of. Air, water, animal, etc. ये सभी examples हैं किसके? Of natural things. All right. So write over here, natural. Then third, we have a computer runs on. Computer किस पे run करता है? Computer run on electricity. All right. So write over here, electricity. And the last, machine saves our. Machines क्या save करती है हमारा? Time, because they work very fastly. So write over here, time. All right. Next we have write true or false against each statement. हर एक statement के against हमें true and false लिखना है. Number 1, that machines make our work easy. क्या machines हमारा work easy बनाती हैं? तो yes, we will write true for it. Secondly, natural things are made by the man. Natural things man के through बनाई गई हैं. False. ठीक है, natural things are made by the nature. Right? चलो. Then next we have what? See, next statement is that a washing machine provides us fresh, cool air. Washing machine हमें fresh, cool air provide करती है. False. Washing machine के through we could wash our dirty clothes. And fresh, cool air हमें मिलती है air conditioner के through. So this statement is false. A refrigerator is a machine that keep the things cool. Yes. हाँ, refrigerator एक ऐसी machine है जो चीज़ों को ठंडा रखती है. So yes, this will be true statement. All right. Now answer the following question. The first question is that how are the machine useful to us? Machines हमारे लिए क्यों useful है? So as we have discussed कि machines क्या करती हैं? They make our work easy. All right. They do not get tired. They work very fastly. All right. And hence they could save our time also. So like this, machines are very useful to us. We could do many tasks by using machine. Secondly, what are man-made things? Man-made things कौन सी है? The things which are made by the man are known as man-made things. For example, table, chair, car, refrigerator or any kind of machine, etc. Which machine is used to wash our dirty clothes? ठीक है, कौन सी machine है जिसे हम dirty clothes wash करने के लिए use करते हैं? So as we have discussed, that is washing machine. है ना? Washing machine का आप use करते हो dirty clothes wash करने के लिए. Then write any 2 features of a machine. Machine के कोई भी 2 features आपको लिखने हैं. So आप लिख सकते हो that the machine saves our time as it works very fast. Right? And secondly, machines makes our work easy also. Third, you could write machines do not get tired. कभी थकती नहीं है. They work continuously. And the last question, that write some places in your neighborhood where you see the computers. कुछ places आपको बताने हैं जहाँ पे आप computers को देखते हो. So you could write at our school. ठीक है, school पे आप देख सकते हैं computers का use किया जाता है, banks में use किया जाता है, alright, hotels में use किया जाता है, and then at the airport, alright, shops. So इस तरीके से there are many places where we could see the computer being used. All right. So the chapter is completed. I hope you must have understood it. Hello dear students. Today we are going to start the exercises of chapter number 2 of class first computer, that is about the machines. All right. So let's start with it. First of all, we have what? Tick the correct options in the OMR sheet. So number 1, that which of the following is a natural thing? इनमें से कौन सी चीज है जो आपकी natural है? तो that is this flower. This is a natural thing. So option B is correct. Secondly, dash is used to keep things cool and fresh. इनमें से कौन सी चीज का use आप चीजों को ठंडा and fresh रखने के लिए use करते हैं? That is refrigerator. Option C is correct. एरोप्लेन, कार एंड बस. एरोप्लेन, कार एंड बस आपके किस पे वर्क करती हैं? दे वर्क ऑन फ्यूल. दैट इज ऑप्शन बी. ऑलराइट. Now next we come to what? Fill in the blanks using correct word from the help box. So first of all, the things which are made by the man. वो सारी चीजें जो man के थ्रू बनाई गई हैं, they are called man-made things.
ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? मैन मेड थिंग्स वी कॉल. सेकेंडली, एयर, वाटर, एनिमल एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? ऑफ नेचुरल थिंग्स. ये सभी हमें नेचर से बनती हैं, so they are the examples of natural things. A computer runs on, कंप्यूटर किस पे रन करता है स्टूडेंट्स? It runs on electricity. So write over here electricity. Then machine saves our, machine हमारा क्या सेव करती है? Time. Right. Next we come to true and false. Number one, machines make our work easy. Yes, machine हमारा work easy बनाती है. True. Secondly, natural things are made by man. No, natural things made by man नहीं होती है. It's false. They are made by nature. A washing machine provides us fresh, cool air. No, false. ठीक है, washing machine आपको fresh air, cool air provide नहीं करती है. It helps us to wash our clothes. Fresh air, cool air हमें air conditioner provide करता है. Refrigerator is a machine that keep the things cool. Yes, true. Next we come to answer the following question, and number one is that how are the machines useful to us? Machines हमारे लिए कैसे useful है? Because they make our work easy and fast. मशीन्स हमारे काम को easy बनाती हैं and fast भी हो जाता है काम. Secondly, what are man-made things? Man-made things are made by man. ठीक है, man-made things कौन सी हैं? जो man यानी कि human beings के थ्रू बनाई गई हैं. For example, book, chair, right, etc. Which machine is used to wash our dirty clothes? हमारे dirty clothes wash करने के लिए कौन सी machine use होती है? That is washing machine. Alright, which machine? Washing machine. Next, write any two features of a machine. आपको machine के कोई भी दो features लिखने हैं. So you could write the features of machine from here. That you could write machines need our instructions to do a work. Machines को हम instructions की ज़रूरत होती है हम एक work को करने के लिए. Secondly, they do not get tired. Machines कभी tired नहीं होती हैं, हमारे work को easy बनाती हैं. Most of the machines आपकी fuel पे run करती हैं. Okay, and they can work very fast. यानी कि आपका time save करती हैं. So यहाँ से आप कोई भी दो features लिख सकते हो. Alright? चलो. Next, cite some places in your neighborhood where you see computers. आपको अपने neighborhood में कोई भी places जो हैं, कुछ places के name लिखने हैं जहाँ पे आप computer को observe करते हो. So, students, you could write home, school, bank, office. Right? Home, school, bank, office, restaurant, airport, hotel, shops. You could write any of the things from here. Okay? Home, school, office, bank, hotel, shop, restaurant, etc. Airport, railway stations. So these are some of the places in our neighborhood where we see the computers. All right. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. So now let's meet the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.